we are starting with J.K. Hall Medical Physiology. It's one of the favorite book of mine because it expresses so much of information in a very decent way. Like it's completely understandable. So we are going to start with neurophysiology, my personal favorite. It's starting from 973, so we are jumping on to 973. It's quite okay. CNS is one of those topics which is very frequently asked in exams and also very popular among childs for beings. It's quite covering quite very important topics. So okay, I'm starting. So the first chapter, 115, it included functional organization of nervous system. So first of all, we are starting with this thing. Nervous system is a well organized. I'll be reading line to line and giving you the very important information in regular. Starting from first chapter, nervous system is a well organized system of communication that allows the individual to interact with its external environment. It is also a system of integration that coordinates functions of various internal organ systems of the body. So first of all, this is important: communication with the external environment and integration with internal environment of various internal organs. So this is important. Neural connections between body parts provide the basis for anatomical and physiological communications that help in smooth execution of most of the systemic functions such as GI system, secretion of hormones, functions of heart, lungs, kidneys, and musculoskeletal system, and so on. I'll be explaining you later that how does it control GI system, for example, sympathetic and parasympathetic interactions. And then scientists like did not here, Camille Golgi and Santiago Ramon by Casey. They're involved they are known for the Nobel Prize in Physiology and Medicine 1906 for their works and in recognition of their work on the structure of nervous system. So basically they told about the structure of nervous system. I will tell you shortly. First of all, the topic is divisions of nervous system. It has three divisions: central nervous system, peripheral nervous system, and autonomic nervous system. So it's important. We are starting with CNS, including brain. CNS includes brain and spinal cord. Brain is situated in the skull, which continues into the vertebral column as the spinal cord. Brain is divided into three parts: prosencephalon, mesencephalon, and rhomencephalon. Prosencephalon is further also called as forebrain. It is further divided into telencephalon and diencephalon. Telencephalon is the portion which includes this frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe, and so on. So basically it's meant for perception of sensation, cognition, learning, memory, planning and programming of responses. So it's really important because we are thinking of something that we are going to do this. So that processing that occurs in telencephalon. Then there is diencephalon, primarily meant for relay of information to cortex and control of autonomic and endocrine functions. I'll tell you. Look, this is here it is. Prosencephalon, in prosencephalon we are having telencephalon and diencephalon. So telencephalon is this outermost portion which you are seeing as of now. This is responsible for thinking, memory, and all this. This diencephalon, including thalamus, hypothalamus, this is primarily meant for relay of information to cortex and control of autonomic and endocrine functions. We all know actually. There is thalamus, there is hypothalamus. There are so many hormones that are secreted from endocrine functions. So yes, it is important for control of all those. Next part is mesencephalon. This consists of the midbrain structures. Mesencephalon is midbrain, no? So it can be included like midbrain structures. So it can be included in corpora. What are the structures that are included in this? Corpora quadrigemina, cerebral peduncles, corpora quadrigemina, cerebral peduncle, substantia nigra, tegmentum, and midbrain. So I'll go to know this. So this is important. I'll show you in detail what I am talking about now. So it's a very important thing. Corpora quadrigemina, you are simultaneously studying also.
So it's one of those things. Corporal quadrigemina, cerebral pedunculus, but they are superior and inferior. Substantia nigra, as you know, dopamine and Parkinson's. Then there is tegmentum and midbrain. Midbrain contains central pattern generator for locomotion and nuclei for writing reflexes. This is also important. Writing reflex, that the position should be right and all those. So for locomotion, your joint are in right position or no. That's also important. It also contains a part of reticular formation. Reticular formation you will be studying when there are so many centers like vomiting center and your RAS system like activity, you are awake, that system. So writing reflexes and reticular formation. That's also included. Okay, so next, that's this diagram that we are talking about. And the third part, I'll be telling about this diagram just after completing the part. The third part, that is Raman cycle. So Raman cycle also known as Heimlich. So it consists of these two important parts, that is metencephalon and metencephalon. Metencephalon includes pons and cerebellum, and the last third part, that is myelencephalon. Basically, it is medulla oblongata. So this medulla continues on to formation of brainstem. Basically, these all parts like mesencephalon means midbrain, pons and medulla. These three constitute the brainstem. The main functions of brainstem are control of cardiovascular, respiratory center. You will be studying about a lot of center like CTZ, chemoreceptor, liver zone. A lot of centers are there. Cardiovagal center. These are responsible for control of cardiovascular, respiratory functions, motor activities, sleep wakefulness or visual functions. The sleep wakefulness is by reticular formation also. So these are the functions, very important of functions. So we have concluded this cerebral hemisphere, prosencephalon is here, mesencephalon is here, rhombencephalon is here. Prosencephalon we have further studied, so that there is this pterencephalon part, there is diencephalon part. The next one we are going to do mesencephalon, midbrain. Then there is metencephalon included pons and cerebellum, and third part medulla included myelencephalon. So now we are moving on to spinal cord. Start from the base of the skull as the extension of medulla and continues till the body of first lumbar vertebra. First lumbar vertebra, so this is important. So extend up to first lumbar vertebra. Why it is important? Because you have studied about lumbar puncture. Actually, not studied, but you might have heard of lumbar puncture. In C-section we give anesthesia and it's via lumbar puncture because that comes under regional anesthesia. The spinal cord doesn't run the full length of vertebral column in adults. The space at the end of spinal cord, especially between L1 and L2 vertebral segment, is used in tapping cerebrospinal fluid during the lumbar puncture. So it is important. Between L1 and L2, we do the lumbar puncture. Spinal cord has 31 segments, each giving you motor and sensory cord. So basically there are 31 bilateral segmental pair. I'll be telling you how. You have heard of it. There are 8 cervical, 12 thoracic, so on. So there will be approximately 31 bilateral segmental pair. Spinal cord contains all the ascending and descending tract. You will be hearing about these tracts later on. You have heard of spinothalamic, corticospinal. So these are called ascending and descending. Now the point comes is what's the main function of spinal cord? Actually, why it is. So you have come to know till now that there are so many nerves that controls the periphery. So that's the thing here. It will be receiving the sensory inputs. This is important from peripheral structure via somatic nerves and transmitted to the brain. It will be signalize their information to brain, and brain in turn regulates that signal and convey the signal originating from brain motor and autonomic areas to the target structures. Next one is peripheral nervous system. So what does it concluding of? It basically includes somatic nerves that come out of the spinal cord to nerve it. This is important. It includes the somatic nerves to convey different body parts like skin, muscles, bone, and the main function is basically PNS. If you talk about is to collect and convey information from peripheral structures to CNS via sensory axons. So
So basically it is collecting the information, it is taking it to brain and then convey the motor signals from CNS to cells and related structures via motor neuron. So this is main thing which we were talking about. The next and third part is autonomic nervous system. So it consists of nerve fiber originating from the spinal cord and brainstem. So this is important that ENS, it originates from the spinal cord and brainstem both that inhabit the visceral structures. These fibers accompany the somatic and cranial nerves to the visceral organs. So we were earlier studying about this somatic nerves like peripheral nervous system and also CNS. So main function of them is to innervate all the structures. So along with them there is autonomic nervous system that will be explained to them. They accompany this autonomic nervous system accompany that PNS. Okay, the ENS has sympathetic and parasympathetic divisions that work reciprocally to regulate visceral functions. We will be studying about them in detail also. Okay, so first of all we will go in this flow chart. This is really very important. How it is important I will be telling you. There are higher centers in brain. How it is working? First of all you have to start from this stimulus recognition. So what happens is this stimulus recognition, there are sensory pathways. It will be carrying the information to our brain. Okay, so what happens is there is processing of information, and what will happening processing after processing, brain will be sensing. Brain will be sensing, and that will, these are by sensory areas. Okay, then it's learning. Learning how it comes is first we give any stimulus to brain. It will be processing that information, giving the motor stimulus. For example, the very first time you have to hold a pen. आपको सीखना पड़ता है कि हम पेन को कैसे होल्ड करेंगे, कैसे लिखेंगे इसे, लेकिन फिर बाद में ब्रेन में क्या बन जाती है, मेमोरी. सो दैट्स वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट कि लर्निंग होगा फिर मेमोरी होगा. दैट्स स्टोरेज ऑफ लर्निंग इन्फॉर्मेशन. नाउ what happened is this processing of information also leads to planning and programming. So the next time आपको अच्छे से पता होगा करना है. Then there is generation of command signal via motor areas. It will be giving on to parent. What are the responses, the motor activities, changes of behavior. तो ये सब कुछ होता है हमारे साथ में. Okay. Now next we are moving on to functions of nervous system. Major function communication between body parts, integration of systemic functions. As you know, सारे के सारे बॉडी पार्ट मिल के काम कर रहे होते हैं. रेगुलेशन होता है बॉडी फंक्शंस का. रेगुलेशन कैसे होगा? CNS के अंदर इतने सारे सेंटर्स पड़े हैं, हम सब कुछ रेगुलेट करें. देन देयर इज कोऑर्डिनेटेड इंटरेक्शन होता है बॉडी का विद द एनवायरनमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं. नेक्स्ट होता है न्यूरल रेगुलेशन, जो मेन अपन का काम होता है. द न्यूरल रेगुलेशन इज द मेजर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म ऑफ मैनी फंक्शंस एंड प्रोसेसेस ऑफ द बॉडी. हाउ आई एम सेइंग दिस इज, यार इट इज़ इम्पोर्टेंट, दिस न्यूरल रेगुलेशन, इट इज़ द मेन थिंग. अगर ब्रेन डेड हो गया तो कुछ कंट्रोल नहीं है, तो पेशेंट कान भी अलाइव. उसके और सारे सिस्टम्स भी वर्क करना अप्रोप्रिएट रेगुलेट नहीं होंगे. उनको हम बाहर से रेगुलेट कर रहे होंगे, वो अलग बात है. जो आपने देखा होगा ना टिपिकल सीरियल्स में दिखाते हैं इट इज़ इन कोमा, उसको बाहर से हम सिस्टम देके सब कुछ आई फ्लूस देखे रेगुलेट कर रहे होते हैं. सो इट्स डिफरेंट थिंग, अदरवाइज दैट पर्सन कांट से. सो न्यूरल रेगुलेशन द मेजर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म ऑफ मैनी फंक्शंस एंड प्रोसेसेस ऑफ द बॉडी. Nervous system achieves its objectives through neurons that are designed. So neurons is important, very important. I'll be telling about you that in detail. That are designed for rapid transmission of information from one body part to the other. CNS accomplishes its function through 4 major processes. What are these? First of all, recognition of stimulus. I'll be telling you in detail. First of all, stimulus आया, हमने क्या किया? स्टिमुलस जब भी कोई देता है, सपोज को होल्ड का है, उसके बाद फिर वो ट्रांसमिशन होगा इनटू इसका CNS ब्रेन में गया. अब उसके बाद वहाँ पे होगी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस. मेरे को करना क्या है? तो हाथ हटाना. थर्ड होएगा कमांड सिग्नल देगा ब्रेन कि हाथ हटाना, और उसके अकॉर्डिंग फिर जाएगा रिस्पॉन्स. सो इट्स वेरी ईजी. स्टिमुलस दिया, उसने इन्फॉर्मेशन प्रोसेस किया, कमांड सिग्नल गया CNS के थ्रू, और अल्टीमेटली उसने अपने का जो हाथ है वो हटा दिया. दैट्स द स्पेसिफिक रिस्पॉन्स इन अकॉर्डिंग्स विद दिस कमांड सिग्नल कन्वेड बाय CNS. नेक्स्ट आता है अपन का स्टिमुलस रिकॉग्नाइज. बेसिकली हम करते कैसे हैं स्टिमुलस का? हमने बोला ना कि स्टिमुलस जो है वो रिकॉग्नाइज होता है, जो हम यहाँ बोल रहे थे कि रिकॉग्निशन ऑफ द स्टिमुलस. तो हाउ दिस इज डन? दिस इज डन बाय रिसेप्टर्स.
तो सेंसेशन पहले डेफिनेशन बता रखे कि सेंसेशन इज द बेसिक रिकग्निशन ऑफ द स्टिमुलस बेसिकली, जिसको हम बोलते हैं कि हमने स्टिमुलाई रिकग्नाइज कर दिया कि पेन है, टेम्परेचर है, टच है। इसको डिफाइन करना हो तो क्या बोलते हैं, चेंज इन सम फॉर्म ऑफ फिजिकल एनर्जी इन द एनवायरनमेंट, सो दिस इज कॉल्ड सेंसेशन। देन देयर इज रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स का क्या काम होता है, इनकी डेफिनेशन होती है ट्रांसड्यूस द एनवायरमेंटल एनर्जी इनटू द एक्शन पोटेंशियल, सो दिस इज हैपनिंग। टच का न्यूरॉन सेंस करके लेके गए ना, तो न्यूरॉन का जब कुछ एक्टिवेट हुआ होगा वो क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल, तो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है। दिस बिकम पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मॉडलिटीज ऑफ रिसेप्टर्स इन द बॉडी दैट डिटेक्ट चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। ओके, सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। बहुत मॉडलिटीज़ का होता है, कैसे कैसे मॉडलिटी का हो सकता है, देखो अब इसमें से आते हैं मैकेनिकल, केमिकल, फोटिक हो सकता है, लाइक लाइट का स्टिमुलस था उसके रिस्पॉन्स में हमें आँखें प्रोड्यूस कर, साउंड हो सकता है, इट कैन बी थर्मल, कैन बी इलेक्ट्रिकल ऑल्सो। सो इनको कैरी कौन करता है, सेंसरी न्यूरॉन्स, ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नर्वस एक्टिव पोटेंशियल, नर्व एक्शन पोटेंशियल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स टू द सिग्नल्स। ये होते हैं सेंसरी पाथवेज। फॉर एग्जांपल आपका टच का सेंसेशन, वो हम आगे पढ़ेंगे कि एंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक गिवन स्पाइनल कोड से थैलेमस में, दैट्स व्हाई वी नेम दैट। सो ये इस तरीके से आता है सेंसरी पाथवे। नेक्स्ट टॉपिक है इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड जनरेशन ऑफ कमांड सिग्नल। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली अभी गया ना वो CNS में चला गया, वहाँ पे कुछ कमांड सिग्नल आएगा, तो बेसिकली होता क्या है कि CNS डिफरेंट मैकेनिज्म से लेके जाता है। इसकी आउटलाइन क्या होती है, एक आउटलाइन में पढ़ेंगे। सबसे पहले होता है एक्शन पोटेंशियल, यानी कि सेंसरी सिग्नल, वो जाएगा सबसे पहले थैलेमस में, जैसे अभी बोला ना स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक, थैलेमस में जाता है, फिर उसके बाद कॉर्टेक्स में जाता है, कॉर्टेक्स उसे प्रोसेस करेगा और उसके बाद दूसरे नेटवर्क पे जाएगा। अब उसके बाद नेटवर्क में जाने के बाद क्या होता है, वहाँ पे कमांड सिग्नल जाते हैं थ्रू प्रॉपर प्लानिंग और प्रोग्रामिंग मैकेनिज्म्स। उसके बाद ट्रांसमिशन होता है, जो कमांड सिग्नल है ये जाएंगे इफेक्टर ऑर्गन ताकि इम्प्लीमेंटेशन हो उसके प्लान का। अब देखो नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये होता है लर्निंग का। ये इंपॉर्टेंट है, लाइक लर्निंग होता है इसके बेस पे बेस्ड ऑन द सेंसरी इनपुट एंड देन स्टोरेज ऑफ लर्नड इंफॉर्मेशन इन मेमोरी फॉर फ्यूचर यूटिलाइजेशन ऑफ द नॉलेज। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। लर्निंग इसलिए होता है कि फ्यूचर यूटिलाइजेशन का, उसको आपको नेक्स्ट टाइम पता हो कि क्या होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिस्पॉन्सेस। रिस्पॉन्सेस पता लग गया किस वे में हो सकता है, या तो मूवमेंट होगी बॉडी पार्ट की, है ना, क्योंकि हमने बोला हाथ हटा लो, पेन था, टेम्परेचर था, या फिर विसरल फंक्शन। सपोज करो हमने कुछ खाना खाया तो उसके बाद हमारी ग्लैंड सिक्रीट करती है विसरल फंक्शन का, ग्लैंड सिक्रीट करें तो किसके अंदर आएगा, ऑटोनॉमिक। या फिर हो सकता है एकदम चेंज इन बिहेवियर, है ना, बिहेवियर भी चेंज हो सकता है। पेशेंट को दिखा बाहर कुछ गलत हो रहा है तो उसको रोना आ गया, ये सब कुछ आता है बिहेवियर के अंदर, ठीक है। तो ये अपन की मोटर, ऑटोनॉमिक और बिहेवियर के अंदर आता है। इसलिए जो रिस्पॉन्सेज हैं मे बी एन इंटरनल चेंज और कैन बी एक्सटर्नल चेंज। जो हम बात करें थे इंटरनल एक्सटर्नल से कोई भी हो सकता है, तो ये वो डिटेल इसकी हम आगे पढ़ेंगे। अब ये हम सेलुलर कंपोनेंट जो अब हम नेक्स्ट टाइम करेंगे।